Hello and welcome. My name is Zaffar Iqbal and you are watching the Mojo Story. Will Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal be arrested? Now, this is the question that's being asked. The fact that Arvind Kejriwal skipped ED summons three in a row makes grounds for his arrest, and that is what the Aam Aadmi Party members are suggesting in the shape of different tweets that were made by Aam Aadmi Party leaders. They say that they have got inputs that Enforcement Directorate officers will arrest him, and there was tight security at the residence of Aam Aadmi Party leader in the morning. The roads were barricaded and there was security was beefed up. In fact, our correspondent Harshit was on the ground. He sent us this report. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। मैं हर्षित शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। दिल्ली में यूँ तो कुदरत का निज़ाम इस वक्त थोड़ा सा सर्द है, ठंड काफ़ी है, लेकिन इस वक्त हवाओं में गर्मी है अफवाहों की। अफवाहें इस बात की कि आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी भी मोमेंट में अब ईडी गिरफ्तार कर सकती है। ईडी क्यों गिरफ्तार करेगी, कौन सा ये मामला है, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का क्या पूरा घोटाले का जो मामला है जो चल रहा है इस वक्त, जिसके चलते मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री इस वक्त जेल में हैं, इन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पहला समन ईडी ने अरविंद केजरीवाल को भेजा था वो 31 अक्टूबर को था, जिसमें 2 नवंबर को पेश होने की बात की गई थी। टेक्निकली पिछले साल 2023 में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा समय की बात नहीं है, अभी 1.5-2 महीने तकरीबन उस बात को हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को ईडी के उस समन पे पेश नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जी हम इंदौर जाएंगे और हमें चुनाव के लिए जो वहाँ पे अभी कैंपेनिंग करनी है, इस तरह की तमाम बातें की। साथ साथ अरविंद केजरीवाल की टीम ने ये भी दलील दी कि जो ईडी का समन है अरविंद केजरीवाल को, वो समन ही इलीगल है, उस समन की कोई खास वैलिडेशन अभी है नहीं, तो अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। दूसरा समन भेजा ईडी ने, उस पर भी अरविंद केजरीवाल नहीं गए और इस तरीके का एक पूरा इसे कह सकते हैं आप कॉन्टेस्ट चलता रहा ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच में लीगैलिटीज़ को लेकर। अब उसके बाद कल शाम से जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, इन सभी नेताओं ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट करके ये बात साझा करनी शुरू की कि जी सूत्रों के माध्यम से अब जो खबर मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल को कल सुबह ईडी गिरफ्तार कर लेगी। उसके बाद मार्केट में और पत्रकारों के बीच में, नेताओं के बीच में तमाम तरह की अफवाहें फैलने लगी। हमने भी पत्रकार के तौर पर, रिपोर्टर के तौर पर अपने अपने सोर्सेज से कंफर्म करने की जो कोशिश थी वो की, लेकिन कहीं से भी पुख्ता खबर नहीं मिली। फिर अलग बातें होने लगी कि सुबह 7 बजे ईडी रेड कर देगी या 8 बजे तक ये पूरी तमाम चीज़ें होंगी। इन सारी खबरों के बाद से आज सुबह अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा उड़ा और पुलिस की जो सुरक्षा है वो बढ़ती हुई नजर आई। इस वक्त जो आप देखेंगे मेरे पीछे आपको फ्रेम में नज़र आ रहा है, वो पुलिस की जो सिक्योरिटी प्रोविजंस है यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, वो आपको नजर आएंगे। डीएसपी, एसीपी लेके बड़े बड़े तमाम जो रैंक के पुलिस अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी हाल ही में कुछ देर पहले एक और पुलिस अधिकारी यहाँ पहुँचे थे आईपीएस रैंक के, वो शायद अंदर गए हैं, अरविंद केजरीवाल की टीम से उनको मिलना होगा, या तमाम जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं। तो अभी पुख्ता बात यह है कि कोई ठोस सबूत नहीं है इस चीज़ का कि ईडी आज रेड मार के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी या नहीं। लेकिन कल शाम से जो माहौल क्रिएट किया गया राजनीतिक बाजार में, साथ साथ पत्रकारों के बीच में, उस माहौल को देखते हुए सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और अगर आप इस सुरक्षा को देख के कुछ स्पेकुलेट करना चाहें तो आप लिहाजा स्पेकुलेट कर सकते हैं कि हो सकता है आज दोपहर तक ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को लेकर इस पूरे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के केस के अंदर कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिले। Right. Now there are media reports that suggest that in fact the ED is going to issue a fourth summon for Arvind Kejriwal. 3 have already been issued. All the 3 he has skipped. Now, first summon when it was issued for Arvind Kejriwal, he said that he's going on an election campaign to Madhya Pradesh and to other states. Then the second summon, obviously he'd gone for some other engagement. That's he'd gone on a vipassana or meditation to Punjab, and now the third summon that he skipped. Now Atishi, who's a member of the Aam Aadmi Party, has tweeted news coming in that ED is going to raid Arvind Kejriwal's residence tomorrow morning, arrest likely. Now that is what led to these speculations that Delhi Chief Minister could actually be arrested. And legal experts also say that if 3 summons are skipped in a row, then that makes the ground for the arrest of that person. But the media reports do suggest now that, and in fact, the 4th summon will be issued
on Arvind Kejriwal. He might just not be immediately arrested. There could be another summon coming his way. But what does the Aam Aadmi Party have to say? Let's hear. देखिए, पिछले रात को पुख्ता सूत्रों के हवाले हमें पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। और आप इसकी पहले की एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए। जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे तो सबसे पहले बीजेपी वाले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अरेस्ट होने वाले। ईडी ने खारिज किया था। क्या हुआ? मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए। जब संजय जी अरेस्ट होने वाले थे तो सबसे पहले बीजेपी के नेतागण बोलना शुरू कर दिए थे कि 24 घंटे में इनकी अरेस्ट होना तैयारी आप कर लीजिए। ईडी ने तब भी खारिज किया था, लेकिन संजय जी अरेस्ट हुए हैं। अब पिछले 24 घंटों से आप देखिए, समन्स जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता कि समन्स जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटे से हर एक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। मतलब साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी दफ्तर से निकलेगा, ईडी बाद कार्यवाही करेगा। इसलिए हमने कहा है कि ये होना चाहिए। Right. The summons to Kejriwal come after he was questioned for an extended period by the CBI in connection with the excise policy liquor scam. Now, Kejriwal has strongly criticized ED's summons, labeling it as illegal and politically motivated. He's also accused the BJP of orchestrating the summons to hinder his election campaign. Now, Aam Aadmi Party is saying that that Kejriwal is being targeted. They want to they don't want to see him campaigning for the upcoming Lok Sabha election. That's precisely the reason that these summons are issued one after the other. But the BJP has hit back, saying that it is Arvind Kejriwal is just hiding behind meditation sessions and campaigning. He does not want to face the ED. They say that the party, which started with the campaign of war against corruption, is now neck deep in corruption and they are not able to defend it. They say half of the party is already in jail and the other half of the party is struggling and skipping from those summons and cases of corruption. Let's actually hear what the BJP had to say. आम आदमी पार्टी के नेता शोर मचा रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि चोरी भी की है, भ्रष्टाचार भी किया है और अब हंगामा भी करवा रहे हैं। जांच एजेंसी क्या इन्हें बताकर आएगी या जांच एजेंसी किसी को बताकर आती है? गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले अरविंद केजरीवाल, आपको जांच एजेंसी ने मौका दिया कि आप साक्ष्य रखिए, लेकिन आप भागते रहे। भगोड़ों की तरह व्यवहार आपने किया, लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चोरों की बारात शोर मचा रही है, हंगामा बरपा रही है। अरे भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, अपनी चोरी को भी इवेंट बनाना चाहते हैं आप। शर्मनाक है आपका व्यवहार। Right. In the morning, there was a lot of security presence at Arvind Kejriwal's residence. Now, CM house staff was also stopped from entering the CM residence, but later they were allowed to go in, and so was the media. There was additional deployment of security at his residence, and that really fueled those speculations, coupled with the tweets that were made by the leaders of Aam Aadmi Party. But for now, that we are hearing that actually another summon will be issued by the ED. Notably, the former Chief Minister Manish Sisodia, who was also arrested by the CBI in connection with this case, and subsequently ED arrested him on money laundering charges. His bail plea was also rejected by the Supreme Court. Now, clearly, this is becoming a battle between the Aam Aadmi Party and the BJP. Of course, the BJP cornering the Aam Aadmi Party and saying that they don't want to face those corruption charges, while as the Aam Aadmi Party is saying that it's actually the BJP which is scared of the popularity of Kejriwal and they don't want him to campaign
in the upcoming Lok Sabha elections. Now, Harshit, our reporter from the ground, has been tracking that story, and this is what he has sent us. जी, तो आज सुबह से ही इस बात की अटकलें थीं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी किसी भी मोमेंट में गिरफ्तार कर सकती है। सुबह 7 बजे से इस बात का पूरा अनुमान लगाया जा रहा था कि ईडी यहाँ पहुँचेगी और अरविंद केजरीवाल के घर पर, जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, आप फ्रेम में पीछे देख सकते हैं, बैरिकेडिंग की गई है, दिल्ली पुलिस के जवान वहाँ मौजूद हैं। और इस बात की पूरी आशंकाएं जताई जा रही थी कि ईडी जो है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के अंदर आज अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड मारेगी और उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि पिछले 3 समन्स में जो पहला समन 31 अक्टूबर को पिछले साल भेजा गया था, जिसमें 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पेश होना था, वो तब भी पेश नहीं हुआ, और उसके बाद 2 समन्स और भेज गए, जिसमें हाल ही में एक समन कल भेजा गया था, जिसको अरविंद केजरीवाल ने डॉच किया और वो पेश नहीं हुए। उनकी अपनी दलीलें हैं कि समन्स इलीगल हैं और तमाम तरह की बातें। लेकिन उसके बाद आज ईडी के अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचने की आशंकाएं थी। ये उनका सरकारी आवास है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और तो और सुबह जो हमने आपको अपडेट बताया था, जिसके अंदर हमने आपको दिखाया था कि जो फ्लैग स्टाफ रोड है, उसके जो एंट्री और एग्जिट्स हैं, जो बाहर अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर तकरीबन 100 मीटर दूर जो एग्जिट्स हैं, वहीं पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी और वहीं से एंट्री लोगों की रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, प्रोहिबिट कर दी गई थी। लेकिन फिलहाल अब फ्लैग स्टाफ रोड के गेट्स, एंट्री एग्जिट गेट्स भी खोल दिए गए हैं। तो ये एक स्पेकुलेशन और बढ़ता नजर आ रहा है कि क्या ईडी वाकई में आज रेड करने वाली है। और जो सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारला समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्वीट अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखकर इस बात की जानकारी साझा की थी कि भाई अरविंद केजरीवाल जी के घर ईडी के रेड करने की पूरी संभावनाएं हैं और इंटेल हम लोगों को मिल रही हैं। तो कितने सही थे वो इंटेल्स और क्या उसके पीछे उद्देश्य था, इस भी तमाम तरीके की बातों को अब आप चर्चा में देख सकेंगे। The party, including former Deputy Chief Minister Manish Sisodia, are already arrested, and now the ED has issued those summons on the Chief Minister Arvind Kejriwal, also the head of the Aam Aadmi Party. Now, Kejriwal has dismissed these cases as fabricated and an attempt to undermine the Aam Aadmi Party. Now, the case was initiated based on a report from the Chief Secretary of Delhi government, which led to a CBI investigation into alleged irregularities in the formulation and execution of the excise policy. The reported irregularities included waivers granted to retail licensees, refunds, and change in commission rates for wholesale license. Now, this issue has been going on for some time now, and Manish Sisodia, Sanjay Singh, they've already been arrested, and 3 summons in a row were issued to Kejriwal, who has skipped all the 3 ED summons and has said that the case is fabricated. Now, BJP has tweeted, they say, what is Arvind Kejriwal scared of? Has he abandoned Manish Sisodia and Sanjay Singh, who continue to be in jail in the liquor excise scam? Kejriwal, instead of skipping ED summons, should take lessons in corruption from Indie Alliance leaders who can also enrich themselves with his experience. And they put up a cartoon. You can see that cartoon on your screen. Kejriwal School of Corruption, how to do liquor scam. Now, this is the cartoon that they have put up all the opposition leaders in the class, and Kejriwal there at the board, and the caption reads, how to do liquor scam, Kejriwal School of Corruption. So BJP clearly targeting Arvind Kejriwal and his party on the issue of corruption, and Aam Aadmi Party hitting back, saying that this is vindictive policy and they are targeting Aam Aadmi Party. They don't want to see its rise in Delhi and elsewhere, and it's also done precisely to prevent Arvind Kejriwal from campaigning in the Lok Sabha elections. Now, Aam Aadmi Party has been repeatedly reacting to all those developments. This is what Aam Aadmi Party had to say. इस केस में 2 सालों से जांच चल रही है, 500 से अधिक विटनेसेस बुलाए जा चुके हैं, लेकिन 1 रुपए तक का सबूत नहीं मिला, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। अब ये चाहते हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें। इतना ही नहीं,
इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर ले ताकि मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ये अरेस्ट की जो बातें हो रही है वो कई दिनों से बीजेपी करती आ रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हर इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। अब तक ईडी के जितने भी समन्स आए हैं वो इलीगल हैं और इसीलिए हमने इस समन्स का रिस्पॉन्ड नहीं किया है। ये खबर कहाँ से आई कि आज रेड होनी है? ये कहाँ से खबर आपको मिली देखिए, है? और ईडी ने कहा है कि ये खबर फाल्स है, झूठी है, कि कोई रेड आज नहीं हो रही है, ईडी की तरफ से। देखिए, पिछले रात को पुख्ता सूत्रों के हवाले हमें पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। और आप इसकी पहले की एक क्रोनोलॉजी देख लीजिए। जब मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए थे तो सबसे पहले बीजेपी वाले उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अरेस्ट होने वाले। ईडी ने खारिज किया था। क्या हुआ? मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए। जब संजय जी अरेस्ट होने वाले थे तो सबसे पहले बीजेपी के नेतागण बोलना शुरू कर दिए थे कि 24 घंटे में इनकी अरेस्ट होना तैयारी आप कर लीजिए। ईडी ने तब भी खारिज किया था, लेकिन संजय जी अरेस्ट हुए हैं। अब पिछले 24 घंटों से आप देखिए, समन्स जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता कि समन्स जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटे से हर एक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। मतलब साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी दफ्तर से निकलेगा, ईडी बाद कार्रवाई करेगा। इसलिए हमने कहा है कि ये होना चाहिए। आज कोई छापेमारी नहीं हो रही है, आज कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। नहीं, आपको कहां से मिल रही है? नहीं, जो भी हमें सूत्रों के हवाले ही मिली है ये खबर। और आप सबने देखा कि सुबह पुलिस की बड़ी जो एक गैदरिंग थी केजरीवाल जी के घर के बाहर थी। तो हम अब सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे। ईडी का कोई आधिकारिक स्टेटमेंट हमें अब तक नहीं मिला है, लेकिन वो स्वतंत्र हैं। कभी भी अगर कुछ भी अगर उनकी प्रक्रिया होती तो हम तब उसका जवाब देंगे। Aam Aadmi Party, they are insisting that they had a clear input from their sources that Kejriwal will be arrested today morning. Our correspondent Harshit has been tracking this story since morning. He was at the residence of the Chief Minister where he brought us a couple of reports, and now he's at the Aam Aadmi Party headquarters. Let's try and go across to Harshit. Harshit, what are you seeing around? What's the mood there? Please do unmute Harshit. Please do unmute your phone, Harshit. All right. Hi. Am I audible now? Yes. Yes. So right, Zafar, I'm right here at the Aam Aadmi Party's headquarters here in Delhi, and yes, as you mentioned, I was there at the CM's residence. The speculations were being made from last night only that the CM might get arrested today. ED might raid his house, but as soon like I reached the residence quite early in the morning, 7 a.m. we were there, and the ED didn't come till 10 a.m. And now I'm here at the Aam Aadmi Party's headquarters in Delhi, and the mood here is actually I won't say there's a lot of hustle here. I am here at the Aam Aadmi Party's office, and a few of my colleagues from media only are here. I cannot see a lot of politicians from Aam Aadmi Party. Not a lot of supporters are here as well. There were speculations being made that Aam Aadmi Party supporters might come on roads and they might protest against all the proceedings that are being made by the ED or summons being issued by the ED to the Delhi Chief Minister, and then the speculations of the Delhi Chief Minister being arrested by the ED. So there were multiple speculations being made that supporters might come on road and they might, try to protest, and the law and order might get disrupted. But nothing like that could have been seen early in the morning. And here at Aam Aadmi Party's office also, the scene is not that hustle. I would rather say only a few colleagues of media are here and not too much of supporters. In fact, I cannot see a single supporter of Aam Aadmi Party here. So I don't know what were the basis of these claims that were being made by the politicians of Aam Aadmi Party, be it Saurabh Bhardwaj, be it Atishi Marlena, straight away claiming on social media that their sources are confirming that Arvind Kejriwal might get arrested, because it doesn't look like anything like that today, because no supporter I can see, none of the politicians I can see, no MLAs are here. In fact, I just went to the ground where the MLAs and the politicians of Aam Aadmi Party usually, come at the place, and they just get together to do a sort of a meeting, or to just do a protest up against anything. But this hall, this ground today here at Aam Aadmi Party's office is actually very empty.
And the mausam, the weather, is very cold here in Delhi. So I'm not sure whether the supporters are afraid of weather or what was the matter. I'm not sure, but the scene is I cannot see a single supporter here. That's very interesting, Harshit, that not a single supporter is there. But now we're getting to know that Arvind Kejriwal will address a press conference at noon today on the issue of ED summons to him in the liquor policy case. At the same time, we're getting to hear that ED will issue a fresh summon to Arvind Kejriwal. Now, in all of this, thanks so much, Harshit Sharma, for joining us. In all of this, the BJP has hit out at Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party. The BJP saying that clearly the Aam Aadmi Party does not want to face those charges of corruption, particularly the Chief Minister Arvind Kejriwal, and we're getting another update that LG has recommended another CBI inquiry into fake lab tests on ghost patients in Aam Aadmi Mahila clinics. Fake, non-existent mobile numbers were used to mark the entry of patients. Now that's more trouble for Arvind Kejriwal. This is about Mohalla clinics. That's another issue altogether. We're discussing the excise policy issue right now, and that pertains to those summons that were issued by the ED, and ED has, in fact, issued three summons, one after the other, and all the three were skipped by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. In fact, quite recently, Kejriwal was in Punjab doing Vipassana or meditation when the third summon was issued. And when he returned, there was speculation he might, in fact, go and take part in those deliberations with the ED, but that did not happen. He skipped that summon as well. And the BJP coming out strongly against Arvind Kejriwal and his party. This is what the BJP had to say. अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। जो अरविंद केजरीवाल भारत में राजनीति में ये कह के आए कि किसी पे आरोप लगे तो इस्तीफा दे दो, ईडी उनको पहला समन भेजती है नवंबर 2023 में। अरविंद केजरीवाल स्वयं को सर्टिफिकेट दे के कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं। एक चिट्ठी लिखते हैं वो, और वो ईडी को कहते हैं कि अपना समन वापस लो। 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव है और मैं बहुत बड़ा नेता हूं, स्टार कैंपेनर हूं, इसलिए मैं इस समन का पालन नहीं करूंगा और मैं चुनाव में व्यस्त रहूंगा। तो पहली बार अरविंद केजरीवाल जब थर-थर कांपे, घबराए, तो उन्होंने बहाना बनाया चुनाव का। फिर एक और समन दिया गया, ये 21 दिसंबर 2023। इस बार अरविंद केजरीवाल ने कहा देखिए मैं विपासना योग के लिए जा रहा हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। ये कहना गलत नहीं होगा, केजरीवाल करते नहीं है योग, कर रहे हैं केवल शराब की काली कमाई का भोग। उसके बाद एक और समन दिया जांच एजेंसी ईडी ने। आज ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर थोड़ी भी मर्यादा अरविंद केजरीवाल में बची है, कानून के प्रति उनका सम्मान अभी जीवित है, तो वो जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आपने बेईमानी की नहीं तो डरना कैसा। दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए, सत्य सामने आ जाने दीजिए। लेकिन आज एक और नया बहाना आया, लोकसभा चुनाव है इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। और आज ये कहना गलत नहीं होगा, जो व्यक्ति एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ईडी के समक्ष प्रस्तुत होके सवालों के जवाब ना दे,
वो कट्टर बेईमान है, पापी है, भ्रष्टाचारी है, लूट खसोट करता है, कमीशन खोरी करता है, और उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। संदर्भ में यह कहना गलत नहीं होगा कि नौटंकी है फुल, जवाबदेही है गुल। Will be on Arvind Kejriwal's press conference, which is going to happen in noon. That's what we got to know. All eyes will be on that press conference. In the meantime, there are also reports that ED will issue a fresh summon that will be fourth in the row. Will that happen? And if that happens, will Kejriwal skip that one also? And in the meantime, will ED take another step and probably arrest Arvind Kejriwal, as leaders of Aam Aadmi Party are suggesting? We'll keep a close track of this story and bring you all the developments. But for now, thanks so much for watching this show and for joining the Mojo Story. Mojo Story has always made a commitment to its viewers to go to where the story is. And as you can see here, we are at the epicenter of the Israel war on Gaza. We are right at the front line, about 1 mile from the Gaza Strip, as the Israeli military gets ready with its tanks and its gunners to begin its final frontal assault that will take troops into Gaza. As we said, we are not like other organizations. We believe in giving you all sides of the story objectively and as much as possible from the ground. And that's exactly what we're doing here, covering the biggest global story today from the epicenter of the war zone. So please, we need your support. Support us, become a Mojo member, subscribe to us, spread the word, and thank you for your support.